this session is being recorded, and this is Sir Seema Rahman. Uh, please mention your proper name whenever you join the class, otherwise you will be removed from the session. अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें. आप देखें आपके मोबाइल फोन का नाम आ रहा है तो अपना नाम मेंशन. Okay, so today we have a special session and यहाँ से समझ लें आपकी लैंग्वेज का आगाज होता है और यहाँ से दिल की धड़कन आती है. अगर आप वर्ब को समझ लें तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे. Verb is, I normally call verb like it's the heroine of your session. Heroine के बगैर फिल्म नहीं बनती ना. So we have no English without verb. We cannot make a sentence without verb. Verb is a word which shows action or a state. It tells us about time. It also describes a situation. जब मैं सेंटेंस को देखता हूँ ना, व्हेन आई लुक एट द सेंटेंस, तो मेरे जहन में क्या ख्याल आता है, मैं क्या महसूस करता हूँ. अगर मैं सच बताऊं तो ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर. व्हाट आई फील दैट यहाँ पर सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आती है वो टाइम है, कि हम टाइम की बात कर रहे हैं. He writes a letter, he wrote a letter, he writes a letter, he wrote a letter. जब भी हम सबसे पहले इस चीज को देखते हैं तो हमारे जहन में यही बात आ रही होती है कि हम बात कर रहे हैं टाइम की. आप देखें, सुने सेंटेंस को गौर से सुने. ही प्लेज, ही प्लेड. आप जैसे ही प्लेज और प्लेट को सुनते हैं आपके जहन में जो बात आ जाती है वो कौन सी बात है? वो बात जो है आपके जहन में आती है, सर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम. एम आई राइट और नॉट? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही सी, ही सॉ. जैसे ही हम इन चीजों को सबसे पहले देखते हैं हमारे जहन में ये बात आती है कि हम बात कर रहे हैं टाइम की. सबके मेरे जहन में तो ये बात आती है. आप लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू यू से? माइक्स ऑन है आपके पास. एम आई ऑडिबल? यही आती है, पक्की बात है. लेकिन गोरा ये बात नहीं करता है. गोरा अपनी डेफिनेशन में सबसे पहली बात ये करता है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट. और मैं हकीकत बता रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात हजम नहीं होती, उनको ये बात समझ नहीं आती. ना वो ये बात समझते हैं कि स्टेट क्या है. उनके जहन में स्टेट की एप्लीकेशन नहीं है. सही कह रहा हूँ? आपके जहन में स्टेटिव वर्ब क्लिक नहीं करता बिकॉज वी हैव नो नॉलेज ऑफ स्टेट वर्ब्स. हाँ, एक्शन के बारे में शायद हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि दिस इज एक्शन. ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर. लेकिन जब मैंने ये कहा कि इन 4 सेंटेंसेस को देखिए और बताइए आपके पास कौन सी बात क्लिक कर रही है, तो आप कोई भी बात क्लिक नहीं करती. हाँ, शायद कुछ बच्चे इस बात को समझ जाए कि सर यहाँ पर बात हो रही है एक्शन की. सही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना. एक्शन वर्ब क्लिक करते हैं हमें समझ आते हैं, लेकिन स्टेट वर्ब्स हमें कभी समझ नहीं आते और ना हमने इसको ज्यादा कभी डिटेल में पढ़ा है. ये पहली दफा शायद सुनाओ. स्टेटिव वर्ब्स, हमारे पास 30 स्टेट वर्ब्स होते हैं. ये बात भी आज अपने कानों से पहली मर्तबा सुनी. शायद 30 से ज्यादा मिल जाए आपको अगर आप ढूंढने निकले. तो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट. इसका दूसरा काम टाइम होता है. और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वर्ब आपके सामने करता है वो क्या करता है? वो करता है, बताइए, जो सबसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन. सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है. अच्छा, अब सिचुएशन से क्या मुराद है? याद करें,
आपने बचपन में टेंसेस पढ़े थे, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, याद आ रहे हैं? यस सर, फोर सिचुएशन। यस सर। याद आ गया ना? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर. ही इज एट होम, ही वॉज एट होम. ही हैज अ कार, ही हैड अ कार. ही हैज अ कार, ही हैड अ कार. ठीक है भाई, चले. अच्छा, अब आप ये देखिए, अब आपकी जिंदगी में एक और वर्ब आ रहा है. अभी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन थी वो आपके पास सिर्फ एक वर्ब थे. आप जिंदगी में याद रखिएगा, जब आपके सेंटेंस में एक वर्ब हो तो उसकी जिम्मेदारियां दो होती है. अगर आपके पास एक वर्ब होगा तो उसकी जिम्मेदारियां दो होंगी. पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट, और तीसरी बात वो जो आपके सामने होगा जिसका ताल्लुक एक्शन से ही होता है, तीसरी जिम्मेदारी जो है वो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है. जैसे यहाँ पर जो वो डिस्क्राइब कर रहा है वो सिंपल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है. मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि सिंपल सिचुएशन के अंदर, याद रखिएगा मेरी इस बात को, सिंपल सिचुएशंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. बहुत ज्यादा एस और एस फॉर्म आ जाएगी, बहुत ज्यादा सेकंड फॉर्म आ जाएगी. यानी कि जब हम सिंपल सिचुएशंस की बात करते हैं तो तीन तरह के वर्ब्स हमारे सामने आते हैं: गो, गोज और वेंट. और तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि गो और गोस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करेंगे, वेंट का इस्तेमाल हम पास्ट में करेंगे. बचपन की बातें रिवाइज हो रही है, जहन में आ रही है बचपन की जो बातें थी, जो आप लोगों ने यस स्कूल सर। लाइफ में पढ़ी थी. ठीक है ना? उसको रिफ्रेश करना है हम लोगों को, और उसका सही ट्रैक, उसको सही ट्रैक पर लेकर आना है कि हमने जो बातें पढ़ी हो उसमें जो गलतियां उसको हम दुरुस्त कर लें. ठीक है. अच्छा, अब आइए, अब आपकी जिंदगी में आ रहा है एक और वर्ब. जब आपकी जिंदगी में एक वर्ब और आता है तो याद रखें वो, उसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का पुराना नाम है हेल्पिंग वर्ब. क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल्स अस अबाउट टाइम. अब आपके सेंटेंस में याद रखें दो वर्ब्स आ गए. जब आपके सेंटेंस में दो वर्ब्स आ जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. और जब जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को टाइम की जिम्मेदारी देती है. ऑक्सिलरी वर्ब को जो जिम्मेदारी दी गई है वो टाइम की है. क्या आप टाइम की बात करें? ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी टाइम. ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी टाइम. आ गई बात समझ? और मेन वर्ब की जिम्मेदारी है अब एक्शन और स्टेट और साथ में सिचुएशन को डिस्क्राइब करना. ये जिम्मेदारी किसको दे दी है भाई? एक्शन और स्टेट को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी दे दी गई है. पूरी पूरी जिम्मेदारी मेन वर्ब को देती है. बस याद रखना है कि जब सेंटेंस में दो वर्ब्स आते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट होती है, और डिस्ट्रीब्यूट होकर के उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी. ऑक्सिलरी वर्ब की औकात याद रखनी है टाइम. और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं, आगे बढ़िएगा, दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन. और ये हमारी मदद करते हैं नेगेटिव बनाने में और क्वेश्चन बनाने में. नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में अगर कोई हमारी मदद करता है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब्स करते हैं. ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन. दे आर मीनिंगलेस बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल. इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं है, डू बी हैव की अपनी कोई मीनिंग्स नहीं है, लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं. ठीक है, ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं. आ गई बात समझ? अच्छा, अब आप ये देखिए, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने बाद लाजमी तौर पर मेन वर्ब लेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब्स, आज इसके बाद असाइनमेंट भी मिलेगा आपको, एक टेस्ट भी है आज आप लोगों का इसी असाइनमेंट लेक्चर के बाद. जब आप ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आपको मेन वर्ब भी लगाना होता है. और हर मेन वर्ब डिफरेंट फॉर्म में आएगा. जैसे डू आपने लगाया तो डू के बाद
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बी के बाद वर्ब आईएनजी, एफ के बाद थर्ड फॉर्म, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बी प्लस वर्ब आईएनजी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये याद कर लो, ये बुनियादी बात है। ये सारी अंग्रेजी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस करती है। हमें बहुत ज्यादा पागल बनाया जाता है कि यू भी कर लो, यू भी कर लो। ये सिंपल इजीएस्ट आसान हलवा तरीन तरीका है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का। और जिस रास्ते से मैं लेके जा रहा हूँ, ये रास्ता सीधा निकलता है आगे फ्लुएंसी के हाईवे पर। बस यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। लेकिन मैंने हमेशा समझाया है, हैव पेशेंस। एक दिन में जादू नहीं कर सकता मैं, आई एम नॉट अ मैजिशियन। आई नीड 3 वीक्स, और 3 हफ्ते मैं अपनी पहली शिकायत आप लोगों को जमा करा दूं। जब डिस्कशन क्लास चल रही है तो उसमें बैठोगे, सुनोगे तो कानों में अंग्रेजी जाएगी ना, तो जबान से बाहर निकलेगी। जब डिस्कशन क्लास का टाइम है, आपके लिए 3 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी स्पोकन क्लास, आपकी डिस्कशन क्लास, आपकी ग्रामर। आपने किसी भी एक क्लास को नेग्लेक्ट कर दिया, स्किप कर दिया, नहीं मैं तो नहीं बोल रही, मैं तो बोल ही नहीं पा रही, मेरी तो बारी नहीं आ रही। भाई बारी नहीं आ रही, तुम्हारे कान में अंग्रेजी जानी चाहिए 3 हफ्ते तक मुसलसल, 1 घंटे 2 घंटे। जब कानों में अंग्रेजी जाएगी तो ये जबान से निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन आप लोगों को प्लेजर चाहिए, बोलने का मौका चाहिए, सुनने का बर्दाश्त नहीं है। जिसने सुनना शुरू कर दिया ना, 3 महीने 3 हफ्ते बाद वो बोल रहा होगा, गारंटेड। स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूंगा मैं, क्योंकि बिकॉज रिसर्चर्स मर गए रिसर्च कर करके। लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो भाई आप सुनिए, डिस्कशन क्लास लाजमी लिया करें। दिन में 2 डिस्कशन क्लास ले, एक में सुने एक में बोले। लेकिन यहाँ पर हमारी आवाम समझ समझती नहीं हमारी बातों को। तो ये रेसिपी है हमारी, डिस्कशन, स्पोकन, ग्रामर, बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। आपके पास टाइम है तो तीसरा सेशन भी ले ले, 1-to-1 डिस्कशन भी ले लीजिए, प्रोनाउंसिएशन भी ले ले, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। लेना चाहे अच्छी बात है, उसमें मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, मर्जी है आपकी। अगर आप जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो 2 घंटे का सेशन आपके लिए कंपलसरी होता है। 8 सुबह में अगर ले रहे हैं तो 10 से 12, दोपहर में ले रहे हैं 3 से 5, रात में ले रहे हैं 8 से 10। ये कंपलसरी पार्ट है आपका। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होता है वो आपके लिए, हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मर्जी है आपकी। वेन एवर यू वॉन्ट टू मैनेज यू कैन। और डिस्कशन को भी मैंने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप डिस्कशन दिन में किसी टाइम पे भी मैनेज कर लें, बट यू हैव टू बी देयर, you have to stick, you have to listen, and when you are listening you need to write what you are listening। vocabulary उसमें से एक्सप्लोर करें, vocabulary को याद करें। ठीक है बेटा? तो ये मैंने आज सुबह महसूस किया था, तो एक शिकायत जमा करा दी। मैं छोड़ के गया था, कितने स्टूडेंट्स, 20 से ऊपर थे। और जब मैंने आखिर में एंड की मीटिंग, तो 8 थे। 12 लोग खाना पकाने चले गए थे। खाना पकाती रहे, कान में हैंड्स फ्री लगा रहा है, सुनते रहे। मैंने नहीं कहा बोले, सुनते रहे। और देखे, मैंने आप लोगों की डिस्कशन क्लास में ना कोई एक्स स्टूडेंट या प्रीवियस स्टूडेंट्स नहीं रखे। मैंने आप लोगों की क्लास में आप ही के क्लास के स्टूडेंट्स रखे हैं। सारे एक ही लेवल के स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास पढ़ रहे 100+ स्टूडेंट्स। मैं उनके साथ आपको ऐड कर दूं तो फिर आप कहेंगे हमें मौका नहीं मिल रहा बोलने का। यही बोले जा रहे हैं। ठीक है? फ्राइडे को देखिएगा, आपकी मुलाकातें होंगी प्रीवियस स्टूडेंट से, फ्राइडे स्पेशल में। आप कहेंगे ये तो अंग्रेज के बच्चे। उनको भी कितना अरसा हुआ है, 2 महीने हुए हैं। तो आप लोग की अभी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, आपके पास सिर्फ वही स्टूडेंट है जिनकी उम्र 1 हफ्ते 2 हफ्ते बस। तो इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, एक दिन हो सकता है, आज ही पैदाइश हुई हो, अभी 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 खुशखबरी आई हो, स्क्रीन शॉट आया हो अभी पेमेंट का, हाँ सर बस मैं अभी अभी पैदा हुई हुई हूँ, आज ही मेरा पहला दिन है, 10 मिनट हुए, बस ये है लेवल। तो आपके पास जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो सब नए हैं। तो आप ये मत सोचें कि यार मैं गलती करूंगी, सारे एक दूसरे एक जैसे ही है भाई। आप में से हो सकता है कोई हीरा हो ऑलरेडी, वो अपने आप को पॉलिश करने आ गया हो। ठीक है बेटा? So be regular and be in your classes. Don't skip your classes. There are 3 auxiliary verbs: do, be and have. हमारे पास 3 auxiliary verbs होते हैं। कितने auxiliary verbs होते हैं? 3 auxiliary verbs: do, be और have। अब
डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। गौर से देखिए, डू खुल गया, जब डू खुला तो डू और डज और डिड। बी खुला तो इज एम आर वॉज वर। हैव खुला तो हैव हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए बी को, डू को खोला तो डू डज और डिड। तमाम बच्चे ये बात जानते हैं कि डू डज प्रेजेंट में आता है और डिड पास्ट में आता है भाई? तमाम Yes, बच्चे ये बात yes, जानते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इज एम आर प्रेजेंट में आता है, वॉज वर yes, पास्ट, sir. ये बात सबको क्लियर है। हैव एज प्रेजेंट, हैड पास्ट। और अब इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आप फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आईएनजी और थर्ड फॉर्म। और ये वर्ब आईएनजी कौन सी सिचुएशन को जाहिर करती है? प्रोग्रेसिव सिचुएशन को। पर थर्ड फॉर्म कौन सी सिचुएशन को जाहिर करती है? परफेक्ट सिचुएशन। Perfect. सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। याद कर ले बेटा, ये बुनियादी बातें हैं, ये बातें दिमाग में बैठ गई, जबान पर ये 12 फॉर्मेशंस लेकर आनी है मुझे 24 घंटों के अंदर। 24 घंटे में 12 फॉर्मेशंस आपकी जबान पर होंगी लाजमी। ठीक है? डू डज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी, हैव हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब चौथी फॉर्मेशन देखिएगा। चौथी फॉर्मेशन में वर्ब आईएनजी किस चीज को शो कर रहा है? प्रोग्रेसिव सिचुएशन को। अब वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या लगता है? बी। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या लगता है? बी। और बी से पहले हमें, अब बी यहां तो नहीं लगा सकते क्योंकि परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो परफेक्ट में हमने क्या किया? बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो बन गया बीन। और ये बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, हैड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आ गए आपके पास 8 टेंसेस सामने। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये बातें आपको ऑलरेडी आती थी, लेकिन मैंने सिर्फ रिवाइज करवाई है और शायद बहुत आसान फॉर्मेट के ऊपर आपके सामने फॉर्मूले रख दिए। अब आप देखिए 6 सेंटेंसेस देखिए आप अपने पास स्क्रीन पर। डू यू स्पीक और डिड यू स्पीक, क्या पहला वर्ब आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं? Yes, sir. Past डू, and डू और डिड। हमेशा याद रखना, ये लैंग्वेज का रूल है, जो पहला वर्ब होता है वो टाइम की बात करता है। जो पहला वर्ब होता है वो टाइम की बात करता है। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, आर और वर्ब टाइम की बात कर रहे हैं। हैव यू yes, sir. कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड, पहला वर्ब टाइम की बात कर रहा है। सर की बात सच हो गई। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। और आगे देखो, फर्स्ट फॉर्म सिंपल, वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव, थर्ड फॉर्म परफेक्ट। तो क्या बन गया? क्या बन गया? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। आ गए फॉर्मेशंस दिमाग में आसानी से, Yes, कोई sir. टेंशन नहीं। Yes, चलिए, sir. अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं, एक सेंटेंस में आपको दूं, ही राइट्स अ लेटर, अगर मैं आपसे कहूंगा इसको पास्ट कर दे तो क्या आप कर देंगे? ही राइट्स अ लेटर, Yes, sir. ही रोट, ही रोट अ लेटर। He wrote the letter. अच्छा, अगर यही बात कहूंगे इसको प्रोग्रेसिव कर दें, ही राइट्स अ लेटर, इसको प्रोग्रेसिव कर दें, तो आप लोग क्या He is करेंगे? writing a letter. ही He इज is writing a letter. यानी कि आप, अगर मैं कहूं ही राइट्स अ लेटर, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाइए। He has written a letter. ही हैज रिटन अ Written a लेटर, letter. ही हैज रिटन अ लेटर। अच्छा, ही हैज रिटन अ लेटर मैं कह रहा हूं इसको पास्ट प्रोग्रेसिव में ले जाइए। He had. पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रो 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 He प्रोग्रेसिव। has Had been. been He has written been a writing a letter. letter. He has been writing. अस्तगफिरुल्लाह, ही वाज राइटिंग, पास्ट Oh. प्रोग्रेसिव, ही वाज राइटिंग अ लेटर। आ गई बात समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, देखिए, sir. आप गूगल क्लासरूम में जाना है आपको, लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे, इस असाइनमेंट को अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? इसी के बराबर में आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब का टेस्ट नजर आ रहा था,
ये देखिए, पहले इसको थोड़ा देखिए, अपना माइक बंद कीजिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज द टेंस ऑफ ईच सेंटेंस। आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ। अच्छा, इसमें थोड़ी होशियारी भी करनी है आपको। देखिए मैंने एक बात समझाई थी कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के मुताबिक आता है। आता है नहीं आता? अगर मैं कहूं कि Yes, sir. इसको पास्ट सिंपल में करो तो क्या राइट नाउ लगाओगे? No, sir. No, हटा sir. दोगे, स्किप कर दोगे। तो Yes, sir. एडवर्ब को स्किप कर सकते हैं आप। अब लिखा हुआ है इसको फ्यूचर टेंस में ले जाइए, तो राइट नाउ को तो आप स्किप करेंगे क्योंकि ये तो प्रेजेंट का है। और आई एम रीडिंग अ बुक को आप क्या कर देंगे? फ्यूचर सिंपल बना I दी। I will read a book. I I will आई read विल a रीड book. अ बुक। आई विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई विल रीड अ बुक। Read. Read a book. अच्छा, उसके बाद देखिए फिर वो कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिखा हुआ है दे प्लेड टेनिस यस्टरडे। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रखा है, वो मैट्रिक लेवल वाली एक्सरसाइज नहीं है ये। दे प्लेड टेनिस यस्टरडे। यस्टरडे का इस्तेमाल क्या प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं? No, No, sir. sir. Present is No. नहीं कर सकते, ये पास्ट टाइम वर्ड है, नहीं. इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। तो अब आप आ जाइए, जब जुमला आप कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप क्या करेंगी? they have played tennis. दे हैव प्लेड टेनिस। Played यस्टरडे tennis. स्किप कर दिया। अच्छा, ही विल बी स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट सेमेस्टर। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कर दीजिए। He is ही studying. इज स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट सेमेस्टर। आप नेक्स्ट सेमेस्टर को स्किप करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि जो भी टाइम एक्सप्रेशन है वो टेंस के मुताबिक आता है। ठीक है ना? अच्छा, अब लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या ये मुमकिन है कि इस सेंटेंस को हम, इस सिचुएशन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर लिख सकें? जरा देखकर समझकर आप जवाब ये भी लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल। देखिए, इस सिचुएशन को क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है? ये तो past की situation है No, sir. sir. बस, तो अब ये आपको complete past situation. ये, अब आप यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। आपसे मैंने कहा द मूवी एंडेड बिफोर आई अराइव्ड। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें। हर चीज थोड़ी, हर सिचुएशन थोड़ी नहीं बदलती है। आपने कहा सॉरी सर, इट्स नॉट पॉसिबल। आई बात समझ? अब लिखा हुआ वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। इसको पास्ट टेंस में कर दें। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप सिर्फ हैव को क्या कर देंगे? Head. बस, तो ये पास्ट Had. टेंस, ये पास्ट टेंस कहला सकता है, पास्ट टेंस। ठीक है ना? अगर ये पास्ट सिंपल में लेकर जाना चाहे तो भी लेके जा सकते हैं। वी वेटेड फॉर आवर्स, दो ऑप्शन है आपके पास। वी वेटेड फॉर आवर्स, हमने घंटों तुम्हारा इंतजार किया, तुम आए नहीं बेवफा इंसान। है ना? थोड़ी ट्रिकी टाइप एक्सरसाइज है ना ये, थोड़ा जहन Yes, लगाना Yes, sir. पड़ेगा। sir. तो Yes, ये sir. आप लोग 7 से लेकर आपके पास पूरे हफ्ते का असाइनमेंट है, ये आराम से कीजिएगा और कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। अरे सर बस कर दे, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये जब खत्म होंगे ना तो उसके बाद तुम्हारे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत जहन से लगाकर इसको टेंस में तब्दील करने की कोशिश करना, और इसके जवाबात फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये पूरे वीक का असाइनमेंट है, आज रात तक का नहीं है। इट्स कंप्लीट वीक असाइनमेंट। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं पढ़ाता 2 दिन हूँ, लेकिन मेरे असाइनमेंट्स जो होते हैं अगर आप उन पे काम करें तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो दिमाग के अंदर एकदम जाकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट्स पे काम नहीं किया और आपने ये महसूस किया कि नहीं ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगी, तो बस फिर हो जाएगा कबाड़ा। अच्छा, आप देखिए एक और चीज मैंने आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेन्स एवरी डे। इट रेन्स एवरी डे। इट डज नॉट रेन एवरी डे। इट मे रेन एवरी डे। अच्छा, ये मेरा अभी 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 हाँ ये है, वो मैं कहूँ मैंने ऊपर क्या लिखा था।
इन ईच सेंटेंस देयर इज एन एरर, एक गलती है। अगर तो आपने ये फॉर्मेशन जो आज आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, अगर आपने इन फॉर्मेशंस को पढ़ लिया तो आप मुझे इस सेंटेंस में गलती बता देंगे। ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल बट समटाइम्स ही वर्क लेट शिफ्ट। बताइए इस एस, वर्क वर्क में एस नहीं है। अगेन ये वो वर्क। ये ही चीज वर्क। मेरे अजीज, ये चीज, द ट्रेन यूजुअली अराइव्स ऑन टाइम बट टुडे इट इट अराइव्स। अराइव। अराइव। अच्छा, ये अराइव होगा या अराइव्ड होगा या अराइव्स होगा? सर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट नहीं अराइव। होगा ना, अराइव्स होगा। बट टुडे अराइव हो। ये इत्तेफाक से सर पास, टुडे तो प्रेजेंट है ना। पर इत्तेफाक है, ये एक पास की गूगली आ गई। इट अराइव्ड लेट, आज ये पास्ट है, आधा प्रेजेंट आधा पास्ट, नहीं सुना। चुप। इत्तेफाक है ये। सारा ऑलवेज अनोली। ड्रिंक्स बट इन द मॉर्निंग, सारा ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग टू वेक अप। गलती बताइए। ड्रिंक्स। ड्रिंक्स, ड्रिंक। ड्रिंक्स। अच्छा। गलती बताइए, ही एम रनिंग टू कैच द बस। ही इज। इज ही इज रनिंग। मीना का क्या गई है? गलती मैंने ऐसी He की is है, running to catch the bus. ये और चीज, हो रही है। दे, रोना नहीं बेटा, दे इज प्लेइंग सॉकर इन द पार्क। दे आर। अब अगर दे कोई आर ये, प्लेइंग। अगर किसी को इसमें गलती नजर नहीं आ रही है ना, तो वो फिर बेटा मेरे साथ छलांग लगा दे निटी जेटी से। दे इज प्लेइंग। यस। अच्छा, दे आर। आर। अच्छा, शी दे आर। डोंट, दे आर। अच्छा, इस दे आर। चौथा देखिएगा, शी डोंट ईटिंग वेजिटेबल, ऊपर बता शी दिया। डजंट। डोंट का डोंट। अस्तगफिरुल्लाह, मैं जा रहा हूँ निटी जेटी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, शी इज। शी शी इज। इजंट। धक्का शी दूंगा मैं, इजंट। छलांग नहीं लगाऊंगा, इतना हलवा है ये, इसको तो शी धक्का देने इजंट। का। शी इज शी नॉट इज ईटिंग। नॉट। यस। यस सर। अच्छा, अब बताइए, क्या ये बहुत आसान लेवल के एरर्स मैंने किए हुए हैं? क्या तमाम स्टूडेंट्स इनको पूरे हफ्ते में पढ़ करके गलतियां निकालने के देखें? आई गो टू द बीच यस्टरडे, गलती क्या की है? अरे सर, गो की सेकंड फॉर्म ये आई तो, वेंट। आई वेंट। आई वेंट। बस। पहले आप इनकी गलतियां निकाल लें, जिसने इन एक्सरसाइजेस में से गलतियां निकाल ली, आप यकीन करें आपकी बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, हियर आर 50 कॉमन फॉर्मेशनल एरर्स एंड टेंसेस। बताइए इनमें गलती क्या है? ही डोंट लाइक कॉफी, ही ही डजंट लाइक। डजंट लाइक। लाइक ही कॉफी। डजंट। दे गो टू स्कूल बाय बस, सिंपल They दे प्रेजेंट गो टू। बनाना। they go दे to गो। they दे go गो। to they go to शी डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, she ही doesn't डजंट। ये डोंट। शी डजंट अंडरस्टैंड द, वी डोंट प्ले। प्लेस की गलती है, we वी डोंट don't प्ले play। फुटबॉल। S नहीं आएगा, S के लिए मुझे। ये एस। बेटा, ये पूरे हफ्ते में ये देखो मैं क्या क्या किस चीज पे काम कर रहे हैं सर? सर काम कर रहे हैं आपकी फॉर्मेशंस पर। ये दो असाइनमेंट्स आपके साथ जा रहे हैं आज। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने स्टडी मटेरियल की तरफ। ये सर ये दो, वाला, जी ये बेटा, वाला किस में, इसी में ही है ये भी एक्सरसाइज? ये गूगल क्लासरूम से आपको पूरी चीजें मिलती है ओके बेटा, वहीं ओके। से आप डाउनलोड करते हैं और वहीं से सॉल्व करते हैं और वहीं से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। चले आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं आप। ये है वो एक्सरसाइज जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और आपकी कॉपी में चेक करूंगा। जो बच्चे दोपहर सुबह सॉल्व कर चुके हैं वो एकदम चीते हो जाएंगे। इसके बाद इस, आपको आयशा ये गूगल क्लासरूम से मिल जाएगा। जो बच्चे फीस सबमिट करवा चुके हैं वो मुझसे क्लास के बाद गूगल क्लासरूम की एक्सेस ले लें। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलिए। आई एम डैश, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। राइट लिखूं, राइटिंग लिखूं, रिटन लिखूं, रोट लिखूं, क्या लिखूं? वन डॉट करके अपना जवाब लिखिएगा।
सना खान सोच समझ के, आई एम राइट होगा या आई एम रोट होगा या आई एम रिटन होगा, क्या होगा? कोई कहता है राइट होगा, अस्तगफिरुल्लाह, वन डॉट करके लिखो, मुझे समझ नहीं आएगा वरना किसका जवाब लिख रहे हो तुम लोग। आई एम राइटिंग। नंबर टू, डिड यू, टू डॉट करके सिर्फ जवाब लिख दे, टू डॉट करके पूरा कुछ सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे पता चलता है कितने लोग क्लास में अच्छा पढ़ रहे हैं। वेरी गुड खदीजा। डिड यू, सोच ले, रिटन होगा। निशो बेटा अपना वो जरूर लिखे आप, 1 2 3, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप या तो आगे जा रही हैं। डिड यू राइट, टू डॉट करके लिखे, डिड यू राइट। वेरी गुड सदफ, वेरी गुड बस, बस वेरी गुड मरियम, वेरी गुड आयशा। सोच ले, सोच ले, सोच ले, ये कौन बच्ची थी? ये बच्ची कौन थी? इर्सा। सोच ले। डिड यू, मैंने अभी बताया डिड यू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? डिड यू। इकरा, वेरी गुड। डिड यू, डिड यू, वेरी गुड। डिड यू, डिड यू, डिड यू, डिड यू। आगे निशो, आगे जाओगी तो फायदा नहीं है, मैं जब तक डिड यू पर हूं वहीं पर रहो, अपने पास लिख कर रखो, फिर एंटर कर दिया करो। आगे भागेंगे तो आपके जवाबात मैं पढ़ नहीं सकूंगा ना आपका नाम ले सकूंगा। वेरी गुड इफ्रा। डिड यू राइट, हैव यू, लिख कर रखो 3 डॉट, जैसे मैं बोलूं हैव यू, आप फौरन जवाब आपका ठक से एंटर कर दें। हैव यू। मैं सबके कॉपीज को चेक कर रहा होता हूँ ना बेटा। सोचे सैरिश बेटा, सोचे 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 सोचे। सदफ, वेरी गुड। इससे मुझे मैं नाम याद कर लेता हूँ और गलतियां भी याद रखता हूँ, कौन बच्चा गलतियां ज्यादा कर रहा है। बसगा, सोचिए। हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? सोचे सोचे। हैव यू, हैव यू, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट। फरा दोबारा लिखिएगा, ही इज नॉट। इफरा आप सही है आपका, ही इज नॉट। निशो अब आपका सही है, ही इज नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग। डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही राइट, डज ही राइट। डू यू, डू यू, एस नहीं आएगा। डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगेगा। डू यू राइट। वर्दे, 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 वर दे, वर दे, वर दे राइटिंग, वर दे राइटिंग। निशो बेटा, वर दे, वर दे राइटिंग, राइटिंग। फरा बेटा, डू यू के बाद डू यू राइट होता है ना बेटा? 6 डॉट करके देखें जो आपने लिखा है, गलती से तो नहीं लिख दिया, लेकिन अगर वो 7 डॉट करके भी होता तो भी गलती होती बेटा। डू यू राइट होगा, डज ही राइट होगा। डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है? वर दे राइटिंग, वर दे राइटिंग। है सारा, है सारा, वेरी गुड, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड आयशा, निशो, वेरी गुड। है सारा रिटन, वेरी गुड, वेरी गुड सैरिश, खदीजा, वेरी गुड। आई डैश एवरी डे, आई डैश यस्टरडे। 9 और 10 का जवाब लिखिए। आई डैश एवरी डे, आसान, हलवा। वेरी गुड। आई राइट एवरी डे, सब आम बच्चों का सही जवाब। आई रोट यस्टरडे, एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, दैट्स वेरी गुड। आगे चलिए। अब आ रहा है ही राइट डेली, क्या लिखूं? ही डैश डेली, ही राइट रोट, क्या लिखूं? ही राइट या रोट? राइट्स, एस लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह। 11 का ही राइट्स डेली, प्रेजेंट की बात हो रही है ना बेटा? ही राइट्स डेली, राइट ही है ना, तो एस लगेगा ना?
चले अब 12 चैलेंजिंग है, देखते हैं पहले कौन लिखकर भेजता है 12 डॉट करके। 12 डॉट करके कौन लिख करके भेजता है, देखते हैं। When I dash letter, he had already dash letter. When I, very good सना, जबरदस्त भाई, पहली पोजीशन आ गई आज आपकी। When नहीं, अफीफा सोचिए, आधा सही आधा गलत। खदीजा सही, इकरा सोचिए, दोनों साथ लिखे ना जब आप स्लैश करके 12 का। इफरा सोचिए, फरा वेरी गुड, इफरा सोचिए, दोनों में सोचिए, बजगा पहला सही दूसरा गलत। आयशा जबरदस्त, मरियम जबरदस्त। लोग कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग में कॉपी चेक नहीं कर सकते, अरे हम करते हैं बच्चों की कॉपी चेक, पढ़ाना आना चाहिए ऑनलाइन। ये सारी रिसर्च का हिस्सा है। मैं जब हम क्लास में पढ़ाते थे ना फिजिकल, तो अगर मैं कोई एक्सरसाइज देकर बच्चों को चेक ना करूं तो दिल बहलता नहीं था। तो अब दिस इज हाउ आई चेक एक्सरसाइज ड्यूरिंग द सेशन। व्हेन आई रोट लेटर ही हैड ऑलरेडी रिटन लेटर। व्हेन आई रोट, सना सोच देखिएगा, व्हेन आई रोट लेटर ही हैड ऑलरेडी, हैड लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म आएगी ना, ही हैड ऑलरेडी रिटन लेटर। व्हेन आई रोट लेटर ही हैड ऑलरेडी रिटन लेटर। नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ, व्हेन आई सी हर शी क्लोज द डोर, क्या होगा भाई? व्हेन आई सॉ हर शी क्लोज द डोर। वेरी गुड खदीजा, सबसे पहला जवाब आपका आया, बाकी लोग सो गए। अब ऊपर नहीं देखना, अब आपको ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, 15 और 16 में बताइए, ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है उसके मुताबिक चेंज कीजिए। वेन आर यू, 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 वेन आर यू गोइंग, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? यू सी हर यस्टरडे, ये है चैलेंजिंग, सुबह वाले तो बता देंगे। अभी तक सबका जवाब गलत, अभी भी गलत। आयशा, आपका जवाब दुरुस्त हो गया, सुबह मौजूद थी आप। अब सिर्फ आयशा का सही है, बाकी खदीजा भी सुबह थी, निशो भी थी, जो बच्चे थे सुबह उनका जवाब सही है, बाकी पूरी आवाम गलत जवाब दे रही है। चैलेंज, ओपन चैलेंज था ये, अभी भी गलत। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या होगा इसके जवाब? बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ, आप जवाब पे पहुंच जाएंगे, 3 बच्चे पहुंच सके। आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है, आपको यस्टरडे दिखता है, तो जवाब दे दीजिए। Did you see her yesterday? Did you see her yesterday? Did you see her yesterday?
आ गई बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन, डिड यू सी हर यस्टरडे, यू गो टू स्कूल डेली। ये आप आवाम सब बना लिए। आयशा वेरी गुड, जबरदस्त। You go to school daily. You go to school daily. Do you go to school daily? It is rain right now. We are enjoy a lot. It is rain right now. We are enjoy a lot. क्या बनेगा भाई? बहुत ही आसान है ये तो। वेरी गुड। It is raining right now. We are enjoying a lot. Very good. तमाम बच्चों का जवाब सही है। When I was asleep, the bell ring. ये है थोड़ा सा चैलेंजिंग, लेकिन बना लेंगे आप लोग। When I was, were you sleeping when I was calling? When I was sleeping, the bell rang. देखो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो व्हेन आई वाज स्लीपिंग द बेल रैंग। नंबर 21। अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब कहां पर है और कहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। वर यू नहीं बेटा, रिंग्स नहीं होगा ना। पास्ट की सिचुएशन है, व्हेन आई वाज स्लीपिंग द बेल रैंग। व्हेन आई वाज स्लीपिंग द बेल रैंग। नेक्स्ट, अब देखो दोनों जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब है। दोनों जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, वर यू स्लीपिंग, ना ना बेटा, क्या मैं कह रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब है, वर है। वर यू स्लीपिंग व्हेन आई वाज कॉलिंग। ऊपर वाला वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड। वर लगा हुआ है ना, तो वर यू स्लीपिंग। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सेम चीज बेटा। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपने अभी ज्वाइन किए है। मैंने सबसे पहले आज यही एक्सप्लेन किया था, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज पर आया हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स ही मैंने बात की थी सबसे पहले। ठीक है, गोइंग, अब यहाँ पर लिखा है गोइंग, लेकिन आगे एडवर्ब फैसला करेगा, आर यू गोइंग या वर यू गोइंग। बताइए, फैसला कीजिए, आर यू गोइंग और वर यू गोइंग। आर यू गोइंग और वर यू गोइंग। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग। जवाब, आर यू गोइंग, वर यू गोइंग। वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। आर यू गोइंग राइट नाउ। यू डन योर वर्क। अब देखे, कभी भी पास्ट परफेक्ट ऐसे नहीं आता, तो ये आप एक ही जवाब है इसका। हैव यू डन योर वर्क। ही कॉल यू एवरी संडे। अब एवरी संडे को देखकर आप क्या लगाएंगे, डज या डिड? अस्तगफिरुल्लाह, बेटा एवरी संडे प्रेजेंट की बात करता है। एडवर्ब का ताल्लुक आपके वर्ब से होता है, तो डज और एवरी संडे दोनों प्रेजेंट के हैं। डज ही कॉल यू एवरी संडे। अब क्या होगा, डज शी कॉल यू या डिड शी कॉल यू? 26।
You cooking when I called? You cooking when I called? Are you cooking? ऊपर हो गया did she call you? Last week है तो did she call you? Did she call you? Are you cooking? Were you cooking? आगे पढ़ना पड़ेगा। सैरिश आगे पढ़ो। वेरी गुड मरियम। Are you cooking? Were you cooking? Were you cooking? ये बाकी जो है वो does it work भी हो सकता है, did it work भी हो सकता है। You have a car, do you have a car भी हो सकता है, did you have a car भी हो सकता है। Do you play cricket भी हो सकता है और did you play cricket भी हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब नहीं है। Are they calling? Were they calling? Both are possible. 27 were you cooking? ठीक है, गॉट इट। एक असाइनमेंट नोट कीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये असाइनमेंट आज रात सोने से पहले बनाना है, वरना हालात बदल जाएंगे आप लोगों के। अगर नहीं बनाया तो फिर आप वो जो पूरे हफ्ते का असाइनमेंट दिया उसके लिए मैं आपको परेशानी होगी। आपको 24 सेंटेंसेस क्रिएट करने। ही ड्राइव्स अ कार, ही डज नॉट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार। अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना है। सेंटेंस मैंने आपको दे दिया है, दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। और बनाकर कहा भेजने आपको? 03170296 209। he drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car। उसके बाद प्रोग्रेसिव, he is driving a car, he is not driving a car, is he driving a car। उसके बाद परफेक्ट, he has driven a car, he has not driven a car, has he driven a car। ठीक है, फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, he has been driving a car, सिंस ऑफ ऑल लगाने की जरूरत नहीं है। he has not been driving a car, has he been driving a car। उसके बाद देखिए, he drove a car, he didn't drive a car, did he drive a car। he was driving a car, he was not driving a car, was he driving a car। he had driven a car, he had not driven a car, had he driven a car। he had been driving a car, he had not been driving a car, had he been driving a car। हो गए 24। थ्री राइट लेटर्स के 24 सेंटेंसेस पहले पेपर पे लिखने, और उसके बाद इसको 30 सेकंड में रिकॉर्ड करना है। जैसे he drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car, he is driving a car, he is not driving a car, is he driving a car, he has driven a car, he has not driven a car, has he driven a car, he has been driving, he has not been driving, has he been driving, he drove a car, he did not drive a car, did he drive a car, he was driving, he was not driving, was he driving, he had driven, he had not driven, had he driven, he had been driving, he had not been driving, had he been driving। कल आपकी जो टीचर होंगी ना, स्पोकन टीचर, आपकी दो स्पोकन टीचर्स है, एक मिस कोमल और एक मिस बुशरा, वो आपसे कल यही काम करवाने वाली है। अगर आपने आज मेहनत कर ली तो कल क्लास में आपको मजा आने वाला है। वो आपको सेंटेंस देगी, बोलेगी ये लीजिए, शी स्पीक्स इंग्लिश, convert into 24 sentences। She speaks, she doesn't speak, does she speak, she is speaking, she is not speaking, is she speaking, she has spoken, she has not spoken, has she spoken। अगर दिमाग और जबान का कनेक्शन जुड़ गया तो बस फ्लुएंसी का हाईवे आपको नजर आ जाएगा सामने, जिसपे आपको सफर करना है पूरी जिंदगी। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज है, और कुछ ये एक्सरसाइजेज आपके साथ जा रही है, और कुछ ये तीन आखिरी बात है, तीन फॉर्मेशन जिसके ऊपर तफसीली लेक्चर आएगा। दो फॉर्मेशन आप लोगों के जहन में बैठी हुई थी, हमारे पास दो फॉर्मेशंस और हैं, दो फॉर्मेशंस और हैं, और वो कौन सी है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। बस ये आपकी मैक्सिमम फॉर्मेशंस है, इसके बाद कोई फॉर्मेशन नहीं है। ये आपको याद करनी है। देखिए, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बी आ गया प्लस वर्ब आईएनजी। यहाँ पे भी आप उसी तरह से सिंपल और प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की बात करेंगे, और वहां पर देखिए मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, शुड और टू। इसका यूसेज क्या होता है वो बात की बात है।
मैंने अभी सिर्फ फॉर्मेशंस के ऊपर बात की है, और इसके ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास मुमकिन है सैटरडे को लूंगा, जो सिर्फ यहाँ से मैं बात शुरू करूंगा 3 और 4 से। ठीक है ना? जब तक आप लोग जो मैंने असाइनमेंट दिए उन पे जरूर काम कीजिएगा, और फिर इसके ऊपर मेरी जो बहुत जबरदस्त डिस्कशन आएगी। ठीक है बेटा? गॉट इट? क्लियर? असाइनमेंट्स आपके पास जो है वो गूगल क्लासरूम में मौजूद है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिएगा। और सर अगली क्लास में वैसे आप क्या पढ़ाएंगे? अगले वीक मेरा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बी एज अ स्टेट वर्ब। बी एज अ स्टेट वर्ब मेरा लेक्चर अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। सबसे बुनियादी और अहम लेक्चर ये आपका है। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिस कोमल ने शायद आपको ज्वाइन कर लिया होगा। मिस कोमल, मिस कोमल, अच्छा हमारे पास 2 मिस कोमल है, मैंने बता दिया, मिस कोमल आ गई है। और दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये आप महसूस कीजिएगा। मुझे तो, मैं दोनों से बात करता हूं, मैं कभी डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है ना? कि दोनों कौन सी है, तो हमेशा पजल्ड रहता हूँ। लेकिन ये आपकी डिस्कशन की टीचर है। और अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, student. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, student. How's it going? Students, am I audible to everyone? Walaikum assalam, ma'am. How are you? वालेकुम अस्सलाम मैम। Alhamdulillah, I'm pretty well. What about you? यस अल्हम्दुलिल्लाह मैम। So good. वालेकुम Thanks for अस्सलाम। Walaikum assalam. Walaikum assalam. वालेकुम सलाम मैम। You're just यस मैम, प्लीज ऑडिबल। on the trick. Ma'am, your voice is distorted. Nice, clear. Girls, the slide is who was the best teacher that you have ever had? Think about it, and I'll give you 2 or 3 minutes. Girls, hello to everyone. Girls, everyone. Yes, ma'am. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Teacher that you ever had? कौन सी ऐसी टीचर है जो आपको लगता है कि दी बेस्ट टीचर थी मेरी लाइफ की, जिसने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी? So you have to tell that one teacher.
I'm going to give you a half. Now raise your hand. And Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Yes, ma'am. How's it going? Yes, ma'am. I speak. How are you, dear? Shabnam, Ma'am, you. how are you? Yes, ma'am. How are Alhamdulillah, you? ma'am. I'm fine, ma'am. And what's about you? Okay, now tell me a language as well. We talk about the question. Answer me this one. Okay, ma'am. Who was the best teacher that you have ever had? Uh, Miss Shamim, my school teacher, is my best teacher. Because in the school life, my Mr. Mim teacher are teaching well, and we understand, and we are. She is a kind person. When she teaches us, we understand. We speak, feel to free any questions, and she is tell me when I speak, ma'am, again and again. She is not mind, and she taught me. That's why my Mr. Meme, school teacher, is my best teacher. And in the I have done masters, but I don't forget our Mr. Meme teacher. Always I have I contact of my teachers, and my teacher is very happy when I contact, and I respect. My Okay, Mr. Shabnam. Mim Shabnam, is very genius. Yes, Shabnam, ma'am. I'm really impressed. I'm really impressed that you have gotten that teacher. But tell me about your personality when you're school. So what kind of change she has changed? Yes, ma'am. She I Miss Shamim is changed me. Firstly, I'm not hardworking, but my ma'am as, but my ma'am trying, and उन्होंने बहुत मेहनत की. शबनम, Yes, ma'am. I don't. शबनम, मैंने आपको कहा है कि ऐसी क्या एक चीज थी जो आपके अंदर मैम शमीम ने आप पे खत्म की थी? ऐसी क्या बिल्ड की थी चीज जो आपको लगता है कि ये मेरी बेस्ट टीचर है? Ma'am, firstly, I'm not hardworking. Firstly, I'm not hardworking. But when Ma'am Shamim is teaching me, she built my hardworking quality. And this time, I'm reading sixth class, 6th or 7th class, and I'm not hardworking, but my Ma'am Shamim is very kind person, and he is ability my hardworking ability. I impress, and I want to learn more, and I'm trying to Excellent, dear. and I'm trying to Shabnam, hardworking. excellent. Excellent, Shabnam, really impressed. And I have done masters, but this ability is going credit for Miss Shamim. Firstly, I'm not punctual in the class, and I'm not attend all class and all homework, daily homeworks.
And one is most important most important is that Mr. Shamim preferably. Excellent, Shabnam. I want to talk to you more, but other participants waiting. Thank you so much for the participation. Okay, ma'am. Thank Now you, I'm going ma'am. to talk to my pleasure, and I'm going to talk Bazka. Bazka Shafiq, Assalamu alaikum. Alaikum assalam. How's it going, ma'am? Alhamdulillah, I'm pretty well. What's about you? I'm also pretty well. Great. Okay, now tell me, who was the best teacher that you ever have had? Okay, the best teacher I have ever had is my university level teacher, Sir Azad, Sir Mirza Azad. He is very punctual, polite, and a very positive-minded person. He teaches very well, and at the same time, um, he motivates us with our goals that if we want to learning a teacher, if we want to learn other language, it's no matter that you are learning zoology subject. If you have passion and you want to do that, so you can easily do this. The main thing is that he's so polite and positive minded. That's why I had ever think that he is the best teacher in the world. Okay. Okay, dear. Yes, sir. Go. Not this slide is visible. Baska, tell me that what kind of students were you? Actually, I'm also a punctual student, but I'm not confident about myself. I'm being afraid on going like in front of students, and I'm afraid that I don't go on the stage and start my presentation. I'm being afraid of myself, and I think about myself that I know the answer question, but when teacher asks so much, I'm a little bit afraid. If my answer is wrong, then what can I do? So I'm not confident about myself. Okay, I got it. Excellent year. And I think good teacher changed your life, isn't Yes. it? Sorry. Okay, tell me about the teacher. You think that you didn't like her on her. Ma'am, can you repeat? My question is this, that the one teacher that you didn't like. The one teacher. Actually, not a teacher, but it's our principal because her behavior is really strange. She doesn't listen us, but without listening, he starts yelling on us. So I don't like. There is the point. I just want to know. I asked you a question, Baska, listen me carefully. I asked you the teacher which you didn't like it, which didn't you like it, which didn't you like it. So इसमें तो question है ना, so you have to answer me, ये past का question है, so you have to answer me like this, that I didn't, she didn't. You have to use the past verbs instead of present. Okay, Basika? Okay, ma'am. I got it. Okay, excellent. Rather than you were speaking so good, mashallah. Thank you. My pleasure. Girls, raise your hand so I can take you. Afifa, assalamu alaikum. Walaikum salam. How's it going, dear? Alhamdulillah, ma'am. How's you? Alhamdulillah, I'm pretty well. Okay, so tell me, who was the best teacher that you have ever had? Once teacher Dr. Munam, he was my favorite teacher. He's living our college.
But yesterday I talked him. He's a very polite and generous, and when I talk him, he's a very polite and guide us. Anyone I help about study, about future, about job. He tells about us and guide us. In fact, whenever I want about medicine or about any type of topic about that related, he guide us. And I miss him. Her way of methods is amazing. Like her way of checking, his way of checking point of student is amazing. And Great. Okay, Afifa, tell me what kind of student did you, or what kind of student were you? Afifa? I think she's left. Okay, never mind. Okay, tell me, Sana, assalamu alaikum. Walaikum salam, ma'am. How are you, dear? Alhamdulillah, I am good, ma'am. What's about you? Alhamdulillah, I'm pretty well. Okay, dear, tell me, who was the best teacher? Hello? Girls, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Ma'am, अब आई है. yes, ma'am. क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना इसलिए. Sana? Sana? I think she has an internet problem. That's why she got to listen to me. Okay, let her go. Aisha Bukhari. Aisha, assalamu alaikum. Girls? I mean, audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. तो आप लोग मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गर्ल्स लड़कियों का नाम ले तो बात. Ma'am, can I talk? Ma'am, can I answer your question? Ma'am, am I audible to you? Girls, you are audible. Okay, ma'am, can I answer your question? Yes, you go ahead. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. How's it going, dear? Ma'am, I'm going good. How are you? Alhamdulillah, I'm pretty well. Okay, dear, tell me, answer me this question. Who was the best teacher that you ever had? Ma'am, the best teacher I ever had met in my college life. When I'm in second year, my favorite teacher, Ma'am Zainab, she teaches chemistry. She was very polite and have a very nice behavior, and she can't behave us as a teacher in class. She always teach chemistry as a friend, and uh, she always teach chemistry with heart. Due to her hard working, our whole class got above 80% marks in her subject, uh, and all other sections of second year didn't get these marks that all the class have above 80% marks. Just our whole class, due to her hard working, gets these marks.
and I like her so much. And now I'm in university, but when I talk to her, she talks as I am in a as I'm in her class, and she teaches us daily. So I like her so much. Great. You have gotten a really amazing teacher that taught you physics. Amazing. Yes, ma'am. Great. Now I'm going to talk to another participant, Afifa Naeem. Afifa, assalamu alaikum. Afifa Naeem. Hasna? Hasna? Yes, ma'am. आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? Yes, ma'am. Clear आ रही है आपकी voice. तो ये बाकी स्टूडेंट को क्यों नहीं आ रही? मेरी जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है. I don't know why. Ma'am, I don't know why, but आपकी voice बिल्कुल clear आ रही है, बिल्कुल clear. Yes, ma'am, your voice is Yes, clear. Yes, ma'am, That's your why I voice want is to girls अपने हाथों को जो आपके पास है ना उसको प्लीज रेज करें ताकि मैं आपको लूँ. फिर मजा आएगा क्लास में. तो बोरिंग क्लास हो रही है. Raise your hand, girls. Hurry up. Benaz. Great. Thank you so much. Nisho. Assalamu alaikum. Walaikum salam, ma'am. How's it going? Hello. How are you, dear? Yes, ma'am, I'm pretty well. Thanks for asking. What about you? Alhamdulillah. Okay, don't tell me who was the best teacher that you have ever had. Okay, ma'am, I have some point, and ma'am, I have many best teacher, but I must remember Miss Khatija when I was in sixth class, and I always fear in the class. I didn't talk with anyone. I have no confidence. And other teacher was strict, then I more fair. But this Miss Khatija, I gave confidence. She taught English subject. She understood with polite and with care. She guided me everything about study. And she is not strict. She is very polite, and she was kind to me. And maybe teacher she doesn't teacher in the school, and I'm not here. Yeah, that's it. Ma'am, I'm done. Excellent. Thank you, ma'am. Yeah. Excellent, Nisho. Yeah, Nisho, ma'am. Yeah, one it is thing I a want to say, you used conditional sentences. yes, ma'am. Listen me carefully. आपने कहा अगर वो Okay. टीचर वहां ना होती तो मैं आज यहाँ ना होती. हाँ, I'm तो मैम right? ये समझ में नहीं आया इंग्लिश में. Yeah. So yeah, I'm with you. I'm teacher. That's why I'm want to teach you. आपने कहना है if she didn't teach in the school and that time, I wouldn't be that person today. Okay. Ma'am, repeat again this sentences. Okay. Yeah. If she didn't teach in that school, Okay. I wouldn't be there today. I would not. I oh I would yeah, I wouldn't be not. there. Yeah. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. One thing I want to know, आपने जब मुझे आप सुना रही थी आपने लिखा हुआ था ये? यस मैम, ये मैंने ना पहले ही ना सुबह पढ़ लिया था, तो फिर मैंने नोट बाद में किया था. Okay, I got it. Excellent, Isho. Keep it up. Yes, ma'am. Now I'm going to take Ikra. Ikra, assalamu alaikum. Ikra, assalamu alaikum. Girls, मुझे लगता है कि आप लोग क्लास पे आके ना अपने कामों में लगी हुई हैं. बेनजीर,
अपना हैंड फ्री उतार दो प्लीज काइंडली प्लीज टेक इट ऑफ योर हैंड फ्री Ma'am, yeah now answer me the question hurry up my best teacher in my when I was in a class, and there is a teacher in her name was Miss Raja. It's a very kindness personality. She always teaches much out of course and a lot of things about knowledge and other activities. When we couldn't anything, then she always encourage and support every girl, not only me but other girls also. She she was very good teacher. She always helped about girls when we when we couldn't anything. Then she encouraged us and she always support us because she tells us you are a girls and your responsibilities for different for boys and men. Then we should careful every field in education at home and in our life. Then and she also for my best teacher and I like it. That's it, ma'am. excellent Benazir excellent Thank you. गर्ल्स वन थिंग आई वांट टू से टू एवरीवन आप सबको मैं एक चीज कहूंगी अभी तो मुझे आप लोगों के साथ प्लीज म्यूट योरसेल्फ अभी तो मुझे आपके साथ इतने दिन नहीं हुए मैं एक दो हफ्ते के बाद प्रॉब्ली 2 हफ्ते के बाद मैं आप लोगों की मिस्टेक्स को जो है पॉइंट आउट करूंगी ठीक है मैं आप लोगों की गलतियां बताऊंगी आप कहाँ कहाँ गलती करती हैं ठीक है जब मैं आप लोगों को गलती बताऊंगी किसी स्टूडेंट ने भी आप लोग सब मेरी बहनों की तरह हो तो किसी ने भी क्योंकि हम बहनों को इतना कुछ कह देते हैं कि ये ठीक करो तो माइंड नहीं करना ठीक है एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जब पॉइंट आउट करूँ मिस्टेक तो किसने ये नहीं कहना कि ये क्या नो यू हैव टू वर्क ऑन दैट पॉइंट व्हिच आई पॉइंट आउट योर मिस्टेक ठीक है आप उसको इम्प्रूव करना है मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ क्योंकि आप लोग जब बोलोगे आप लोग बोल रहे हो बट यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर यू डूइंग व्हेन आई टेल यू this would help you to next time to when you speak okay तो ये हम लोग ऐसे सकते हैं कि हम सब बहनें हैं और बहनें सीख रही हैं ठीक है मैम आप अभी Yes, हमारी ma'am. मिस्टेक्स निकाले ताकि हमें पता चले अब 2 वीक्स बाद नहीं आप अभी से हमारी मिस्टेक्स निकाले girls you know why because I don't know everyone that's why I want to take a time मैं मुझे पता है कि आप हंसना है कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं मुझे उनके नाम याद हो जाते हैं फिर उनसे मैं उतनी ही मेहनत करवाती हूँ जिनकी उनको जरूरत होती है so मैं जैसे कि for example if I take an example of Hasna you so you are doing a great job but I want to tell you one thing that you have to work on your vocabulary आपकी vocabulary थोड़ी सी strong होनी चाहिए so ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं हर सेशन में बताऊं करूंगी इंशाल्लाह ओके मैम माय नेम okay इज now हंसा Hansa. Sorry. हंसा So I'm so poor to pronounce the name. इतने प्यारे प्यारे नेम होते रहते हैं मुश्किल नेम होते हैं मैं कहती हूँ क्या बोल रही हूँ हंसा नेम है मेरा okay thank you so much now this name I couldn't I don't think so I can pronounce is Qurashi IRXXAA Qurashi Assalamualaikum, ma'am. My name is What? Irsa. Irsa Qurashi I was supposed to be that would be Irsa because मैं नहीं चाहती थी आपका नाम गलत हो इसलिए मैंने आपका सरनेम ले लिया How are you, ma'am? I am pretty well Irsa what's about you I'm also well, ma'am. uh-huh Alhamdulillah. okay now tell me Irsa who was the best teacher that you have ever had Ma'am, my name is Irsa and I am a
I have done my intermediate, and my best teacher is Farid Sham when I was schooling in metric. And yes, when I was schooling, Farid Sham is my best teacher. He teaches us math and physics, and still he is my best teacher because he is a very friendly with students. And when I was facing any problem in my life, and still I facing any problem, and I will discuss him, and he guide me properly, and that's why he is my best teacher. Irsa, I have a question to you. Now tell me, do you think, listen me carefully, okay? Do you think that in Pakistan, do not, teachers do not pay attention in the student? No, ma'am. I think teachers are very friendly with students, and so students can any easily ask anything with teacher, and students can easily discuss anything with teacher. Okay. Now I'm going to tell you on my story. And to say to every time that he couldn't achieve anything, not by his words, but by his action, by his face, by his everything. So I used to be not very good student at the school time, but when I in a you can say a 9 and 10 class, so since a childhood, I was really, really, really confident person. Although I was not a good student, but my teachers, they were always say to me, Oma, you can't do anything. And not by her words, it's not his words, but they say it by their actions. So I always think that in Pakistan teacher, they do not, the Pakistan teachers are not good. So I always feel like this. But you cannot say I have met a very good teacher, a female teacher, and she has changed my, you can say, a thought about this thing. So that's why I want to ask you that do you think also, and have you ever felt the teacher do not give that much respect or that much confidence, which a student? Ma'am, I think not every teacher, all teachers are good, but somehow maybe. Yeah. Like जब आपने कहा है ना somehow का मतलब होता है कि कैसे some extent किसी हद तक some extent किसी हद तक ऐसा हो सकता है. Okay. इरसा, Yes, ma'am. आप सबको मैं एक बात कहती हूँ, मुझे ना आदत है जब मैं आपको कहती हूँ ना कुछ चीज बताती हूँ तो आपने मुझे आगे से कहना है जी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी क्या एक्सप्रेशंस हैं और आप क्या सोच रहे हो उस वक्त. तो आपने कहना है जी मैम, जी मुझे समझ आ गई, क्योंकि तो ऑनलाइन सेशन है तो मुझे Hello, मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ. ma'am. Ma'am, I don't know. Today's class very lazy. Our student is a lazy. I don't know. Yeah, I'm putting my all energy on you guys, but you are like, ma'am, yes, yes. Yes, ma'am. I think a weather is bad. It is a reason, and but everyday class is very No, interesting. I tell you one thing. अभी मैं टॉपिक चेंज करती हूँ और थोड़ा सा कॉमिक रखती हूँ ना, तो सब भूलेंगे. Okay. Okay, Irsa, you have done a great job. Irsa, excellent. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. My pleasure. मैं आप लोगों को अपनी एक चीज बताती हूँ, जब मैं किसी स्टूडेंट को ये कहूंगी ना शाबाश, इट मीन्स कि उसने बहुत बहुत आला काम किया आज, ठीक है. तो मैं जिसको भी कहूंगी ना, आप सब ने जो है ना याद रखना है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. Thank you, ma'am. मैं बहुत कम स्टूडेंट्स को कहती हूँ, मैं थोड़ी सी अकड़ू सी टीचर हूँ इस मामले में. Oh no. Ma'am, ओके actually कम today ऑन is our गर्ल्स, first class. ऐसी बात भी नहीं, आप लोग कर सकती हैं, यू कैन डू इट गर्ल्स. ओके नाउ कम ऑन द Yes, टॉपिक. ma'am. आयशा बुखारी. आयशा, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam, ma'am. How are you? I am pretty well, and what's about you? Alhamdulillah, I'm also pretty well. Ma'am, there is some network issue at my side, so I Tell was me, girl. Okay. I have a new question for you. Are you
Are you ready? Talk about this previous. Yeah, you will. You will, dear. You will. इसी के मामले में ही है. Tell me, how can a person can be a good teacher? Okay. A person can be a good teacher. कोई 5 qualities बता teacher. I think, ma'am, a good teacher must have these qualities. Like, he must be honest, loyal, friendly to him or her students. And Girls he clapping must... for Aisha. Aisha, excellent. मैं ये चेक करना चाहती थी कि आप she तो नहीं बोलोगी he की जगह. जब टीचर्स या डॉक्टर या लॉयर जहां हमें जेंडर्स का नहीं पता चलता वहां हम हमेशा ही यूज करते हैं rather than she. तो girls clapping for her. Unmute yourself and clapping for her. बहुत ही सुस्त क्लास है मेरे लिए. बहुत मैं क्लैपिंग कर देती हूँ आपके लिए. Excellent. आज मेरी क्लास तो ही नहीं है. उनको नींद आ रही है. Okay, now tell me, Aisha, who's the best teacher? I think you do other. Yeah. We are so down. Yeah, I think so. Okay, now tell me, girl, who was the best teacher that you have ever had? Okay. First of all, I would like to say teachers have a very important place in our life. They're our ideals. I have many teachers at my school, college, and university life. I respect all of them. Every teacher has some unique qualities, but here I would like to discuss my most favorite teacher who changed my life completely. And that teacher was my maths teacher, Sadil. Ma'am, I think I used to dislike maths earlier. I was not good at mathematics, and the reason is that I was a talented but slacker student, so I never practiced for maths. So he admired me to work hard and practice more and more so that I obtained 100 marks in FSC pre-engineering, and the credit goes to my teacher, my professor, Sir Adil. He always said that he believes in me, I can do it. So I fulfilled his dream and became proud of him. Yes, ma'am. Great, Aisha. Inshallah, dear. Some qualities that he had were: he was a warm, welcoming, friendly, honest, and loyal person. He was trustworthy, and he always worked hard and enforced his students to work hard. So Aisha, excellent. And I have observed it that your pronunciation is so amazing. thank you, ma'am. My pleasure. Actually, I currently work on my phonics. Great. Yes, ma'am. Inshallah, dear. May Allah success you. Ameen. Ameen, Ameen. Thank you so much, teacher. My pleasure. Now I'm going to talk to another participant, Khatija Masood. Khatija, assalamu alaikum. Khatija, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum assalam. Girl, if you are using hand-free, take it off. Yes, ma'am. Okay, now it's clear. How's it going, dear? I'm pretty good. And what's about you, ma'am? Alhamdulillah. Now tell me, girl, who was the best teacher that you have ever had?
I have a best teacher in my life, but I have discussed about her in morning session. Now, may I discuss another teacher? Yes, you can, dear. It's totally up to you. Okay. I have many teacher, but some teacher makes our make their self makes their self special for us because I think when anyone is paying attention on us, so we will automatically create bond building with them. So that's why I have a teacher in my metric class, and she was very good. And first thing is that she was very good looking, and I really like to see her in my class, and she has a lot of knowledge, and she taught us English literature and means sorry, English grammar. And she taught in with creating dramas, and she created dramas and different stories for us, and in this way she taught us grammar. And make different and she made different condition for us, and she called some students, means two or three students in front of all the class, and they perform some activities, and they spoke some dialogues. And she has done this activity with us, and we have uh, and we were enjoying a lot at that time. So that's why I remember her and discuss with you. Excellent. Excellent and really impressive, Khadija. Thank you, ma'am. My pleasure. I'm going to talk to another participant. Is going to be Fariha. Yes, ma'am. Fariha. Fariha. Sorry, Fariha. It's okay, ma'am. You call me but गर्ल्स जब आप मुंह पर गलत नाम लूँ ना, जब आप लोग गलत नाम लूँ तो लोग समझ जाना कि कोमल शेख टीचर आ गई है. it's okay, ma'am. You call me whatever you want. I also had this habit. So You know, मैं चीजें की भूल जाती हूँ, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है चीज की. I think I have to work on it. Okay, yeah, now I tell also, me, Friha, who was the best teacher? Yeah, what were yes. you saying? Yes, I was saying that I have this problem. Even I don't remember the faces, and I forgot the ways and paths where I go. I don't remember exactly. I just open Google Map and this is right or left. I confuse in the directions. You know, I have not this problem. I have a problem. I remember the faces, but I talk a lot to people, but I always forget to ask them their name. ये आपका नाम क्या है? मैं घंटों घंटों बातें करती रहती हूँ उनसे, फिर जाते वक्त कहती नाम क्या था? So this is how I am. Okay, now Cute. tell me. Okay. Yeah. Tell me, I love who was the best teacher. teacher that you have ever had? A lot of teacher who are teaching really good. I have also a good teacher in my student life, but they are very few. One my teacher is, I just remember in a inter, she was a Urdu literature Urdu teacher, and she explains story with a full of fun and in a very detail and depth. And the other teacher I have in my graduation, she was good in English, and she is a literate. Actually, she was a literature teacher. The good thing about that teacher I remember yet, she was so like she was
explain really deeply, because when she talk about any place or thing, she explain it, because she have a lot of travel experience. She told us that with 6 months she worked and 6 months she traveled. When she earned, she spent on traveling. So that's why I remember. So their experience was so huge, and I really impressed when she talked about the things and she explained. Like there was our class was above 100 student, and there was a pin drop silence in their in that teacher class. So I was so impressed. uh, Although every teacher has their own quality, but here something I shared, that mostly teachers want to complete their syllabus. They just come and go, especially in government colleges. They are not, unfortunately they are not very responsible for their field, because teaching is not a job. It is an art, and it is an responsibility. But some teacher fulfill your requirements, and they target your weak points, because they have a huge experience and they find the things. Here in the SK, if I talk about SKH, I really like the method of teaching is Miss Komal Khan. I met you uh, one day ago. I don't know a lot about you, but I really very impressed the Miss Komal Khan. She has a lot of patience. Like she explain again and again and again and again. I think she has a lot of stamina to tell. So I really like that her method. That's all. Excellent girl, and she is Komal Khan. And you should ask to her, and you can ask her that she and I are a good friend. And sometimes a lot of Oh, students say, and sometimes a oh, lot of students say, sorry, what's happening? that's A lot great. of It's times so students, surprising. yeah, sometimes student asks to me, teacher, are you Komal Khan or Komal Sheikh? And then I clear it, and I'm Komal Sheikh. Yeah, I Okay. usually don't tune this time, 4 o'clock, because I'm quite busy. But when yesterday I saw Miss Komal, I thought it is Miss Komal Khan. Then I met Okay. you. Okay, great. Excellent, Rehan. Really impressive. May Allah bless you more. Ameen. Thank you, ma'am. My pleasure. Sehrish, Assalamu alaikum. Basanti, Assalamu alaikum. Basanti, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hello. Walaikum assalam, dear. If you are using hand free, take it off. Yes. Okay, now tell me, who was the best teacher you have ever had? So, teacher, today I am just listening you. Okay. Hello. बसंती आई थिंक आपके शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है और या आप हैंडफ्री यूज कर रही हो जिसकी वजह से मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही. Girls, if you want to ask me any kind of question, so you can ask me. Excuse me, ma'am. May I ask? Yes, Hatija, you can. Ma'am, please kindly tell us just tricks and which suggestion you give us on that point for them who are not able to talk properly, and when they talk and they feel hesitation and they have lost their vocabulary and they can't build proper sentence structure in front of the teacher, in front of others, because I observing
many times we have a lot of students who speak properly, but many students who are like me, they can't speak properly. When they think perfectly, but when they speak and start speaking, they can't. So I kindly suggest Yeah, us dear, something sure. what we will do for it. This is my concern also. Great. गर्ल्स मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि उसने ये किया या आप ये करें। मैं आप लोगों को अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप लोग कहेंगे टीचर झूठ बोल रही हैं ऐसा। मैं अपनी 10th स्टैंडर्ड पे थी तो मुझे एक स्पीच करने के लिए मिली थी इंग्लिश पे। तो उन्होंने कहा था कि आपने इंग्लिश पे स्पीच करनी है। जब से मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इवन दो आई वाज नॉट अ गुड चाइल्ड इन अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे कहा गया कि आपने स्पीच करनी है। स्टिल 8 क्लास तक मैं इतनी नहीं थी, लाइक फाइक जो होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है, वो नहीं थी मैं। तो मुझे कहा गया स्पीच करनी है आपने। बस लाइक कि मैं कैसे करूँ इसको। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसको। मुझे 2 पेज की स्पीच मिली, मैंने उसको पढ़ा, मैंने याद किया। जब मैं स्पीच करने के लिए गई तो क्लास में थी तो लड़कियां बहुत ज्यादा थी क्लास में, 20 लड़कियां होंगी। और क्लास में सर थे। मैं जब स्पीच बोली तो सब मुझ पर हंसे और सर भी मुझ पर हंसे। और आपको पता है मैं खुद पे भी हंस रही थी। लेकिन जब वो सब हंस रहे थे तो मुझे वो मेरे माइंड पर हमेशा वो चीज रह गई थी कि वो बच्चे मुझ पे हंस रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या मैं इंग्लिश छोड़ देती? मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकती, ये मेरे लिए बनी नहीं हुई, ये लैंग्वेज मुझे नहीं आ सकती। लेकिन मुझे मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि आपने जो है ना, ये जो चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें इंसान की पर्सनालिटी बनाती हैं। हमारे जो मुआशरे में जो है ना, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हमारी एजुकेशन में हमारी पाकिस्तान में ज्यादा जिसको वैल्यू दी जाती है वो इंग्लिश है, ओवरऑल पूरी दुनिया में। फिर मैंने क्या किया, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे पास कोई टीचर नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक फोन था। और उसमें मैंने यूट्यूब चैनल खोलती थी और मैं हर तरह की जो है ना सेंटेंसेस को देखती थी। आप यकीन करें, 4 महीने मैंने सेंटेंसेस को लगाए, मुझे कुछ समझ ना आई मुझे। मैंने अकेले समझ रही हूँ, मुझे मैं तो रोती थी, मैं कहती मुझे नहीं आ सकती है, क्योंकि मेरी वो जिद बन गई हुई थी, मैंने सीखनी है। बिकॉज जब वो आप पे कोई ऐसा मोमेंट आ जाए ना, तो आप कहते ठीक है। आपको पता है फिर मैंने क्या किया था? मैं शीशे आगे रोज खड़ी होती थी और मैं इमेजिन करती थी कि 100-200 आदमी मेरे सामने है, मेरे सामने ऑडियंस है, और मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ। मैं कंटिन्यूअसली घंटा घंटा इंग्लिश बोलती रहती थी, घंटा घंटा इंग्लिश बोलती रहती थी। ऐसा लगता था कि कोई क्या कर रही है, अकेले बैठ के बोल रही है। आप ऐसे रूम में शीशे के सामने खड़े होकर जब बोलते हैं ना, आपको अपने फेस के एक्सप्रेशंस पता चलते हैं। मैं कार्टून्स देखती थी, इंग्लिश के कार्टून्स में ज्यादा देखना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अगर आप मूवी देखते हैं ना तो मूवी में बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज होती है। कार्टून बच्चों वाली लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि हम बिगिनर्स होते हैं तो बिगिनर्स के लिए कार्टून वाली लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। फिर मैं मेरे पास 3-4 रजिस्टर्स होते थे, तो मैंने मीनिंग्स लिखे होते थे इंग्लिश के, मैं उसको याद करती थी। और मैं जब वो क्लास लेती थी ना, फिर मैंने ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दी इंग्लिश की। प्रॉपर साल, 1 साल हो गई थी। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ऐसे बोलूं कि किसी को पता ना चले कि मैं एक अटक अटक कर बोल रही हूँ। मैं प्रैक्टिस इतनी करती, अभी भी मैं करती हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। सो दिस इज अ जर्नी। आप लोग ये ना कहिए कि मुझे 3 महीने में आ जाएगा। किसी को 3 महीने में आ जाता है, किसी को 4 महीने में आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट ऑन योर माइंड कि आप उसको कैसे लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं छोड़ के फिर पकड़ते हैं। तो आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है। जब आप हर रोज एक चीज तो करते हैं ना, आप देखना आपको खुद लगेगा कि आपको अपनी गलतियां खुद नजर आएंगी। Very impressive. Yes, ma'am, it's good. आप लोगों को सीरियसली, व्हेन आई वाज टीचिंग माई सेल्फ, आई वाज लाइक मैं नहीं कर सकती, दिस नॉट मेंट फॉर मी कोमल, यू कांट डू इट। क्योंकि टेंसेस मुझे कभी समझ आते ही नहीं थे। आई वाज लाइक दिस इज नॉट मेंट फॉर मी कोमल, दिस इज सो हार्ड। vocabulary, I used to watch cartoon a lot. Now I do not get a time to watch cartoon and these kind of stuff, but I just always prefer to watch and listen in English, so then I can say that ये चीज जो है ना, ये ठीक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो आप लोग भी ऐसा ही करें। यू शुड डू वॉच इन इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश, और अपने आप से इंग्लिश में बात करें। Okay, ma'am. Thank you. Inshallah.
तो मैम हम जो भी वोकैबलरी My वगैरह pleasure. सर्च Inshallah, करते dear, हैं you या don't need to worry about it. तो मैम हमें वोकैबलरी याद करनी चाहिए। हाँ, सर्च करती थी मैं बहुत ज्यादा। नहीं, वोकैबलरी याद नहीं होती। आप जितनी मर्जी याद कर लें, पता क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वोकैबलरी आप 10 याद करते हैं, उसको उसमें से आपको सिर्फ एक लफ्ज याद रहता है। तो आप ज्यादा जी सुने जी सही वोकैबलरी कह को, निस्बत के लिख लिख कर फिर उसको याद करें। नो, आप सुने ज्यादा। दिस इज माई एक्सपीरियंस। सुनने से बहुत आती है। इफ यू, क्योंकि वो जब छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा लफ्ज सुनता है, उसको पढ़ाया नहीं जाता, वो पहले सुनता है फिर वो अपनी उर्दू बोलता है। तो आपने भी यही करना है। आप लोग सुने, आप लोग इंग्लिश के सिर्फ 10 मिनट के कार्टून सुनेंगे ना, आपको उसमें से 10 लफ्ज मिलेंगे। आप दोबारा उस कार्टून को देखें, कार्टून देखने में तो बहुत मजा आता है, तो आप उसको दोबारा देखें, तो फिर आपको बहुत बहुत फायदा होगा। Yes, ma'am. ओके मैम थैंक यू। गर्ल्स, आई होप आप लोगों को मेरी समझ आती होगी, आपको मेरी क्लास का मजा आता होगा। आई होप दैट यू विल बी अ गुड स्पीकर वन डे, इंशाल्लाह। Yes, ma'am. Thank you इंशाल्लाह मैम for प्लीज प्रे फॉर अस एंड वी या विल ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह वी विल ट्राई इंशाल्लाह। मैम मैम नेक्स्ट टाइम जो है ना कार्टून की नेम की लिस्ट जो है ना शेयर करना, जो कार्टून बैठता रहो। मैम यहाँ ना इतने सारे कार्टून होते हैं कुछ समझ में नहीं आता, कोई अच्छे कार्टून हो जो इंटरेस्टिंग हो और फनी हो, से देख कर मजा आए। Ma'am, ओके can डियर। I see the name of cartoons? Because I like to watch cartoons. Yeah, dear, but yeah, inshallah, tomorrow we share the cartoon things. I'll share it because I used to watch. I think Yeah. be in the cartoon. They are so interesting. It's just like we are watching the Mr. Bean movie. And the Tom and Jerry is also very interesting. Yes, And dear. Harry. And Girls, girls, Tinkerbell the is also time, good. girls, the time has been done. Remember me in your prayers. Allah Hafiz. I'll talk to you tomorrow Allah about it. Hafiz. Nice talk to you, miss. Yes, ma'am. Allah Hafiz. Thank you.